तो अब हम आगे बढ़ेंगे और बात करेंगे पार्ट 4 की। ये लास्ट पार्ट होगा और लास्ट पार्ट है लास्ट मॉक का। दिस इज पार्ट 4 ऑफ एंथ्रोपोलॉजी ऑप्शनल, कि जो हमारे पास टेस्ट जो हम कंटिन्यू कर रहे थे 7 सेक्शनल्स और 2 मॉक, उसमें यहाँ पे पार्ट 4 है ये मॉक 2 का। ठीक है, मॉक 2 का ये पेपर, जहाँ पे मॉक 2 में क्या है भाई, पेपर नंबर 2 के सारे क्वेश्चंस हमने कवर किए हैं। लास्ट पार्ट में हम 4 क्वेश्चंस कवर करेंगे, क्वेश्चन नंबर 16 से लेकर 19 तक। तो स्टार्ट करते हैं भाई। क्वेश्चन नंबर 16 है 5B के नाम से है ये, है ना, हमारे पास जो सीरीज में है वो। सो यहाँ पे ये हमसे पूछा क्या गया है, हमसे कहा गया है क्वेश्चन इज डिस्कस दी कंट्रीब्यूशन ऑफ LK अनंत कृष्णा अय्यर। देखो भाई, इस पार्ट में क्या है, 3 हमने देख लिए, 3 क्वेश्चन जिसमें कंट्रीब्यूशन की बात की थी। पहले तो SC बोर्ड से कंट्रीब्यूशन की बात की थी, GS गुहा की कंट्रीब्यूशन की बात की थी। ये तीसरा क्वेश्चन है जहाँ पे हम देख रहे हैं LK अय्यर के कंट्रीब्यूशन की बात। तो पेपर 2 में यहाँ पे इंडियन एंथ्रोपोलॉजिस्ट का बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता है, उनके कंट्रीब्यूशन के बारे में बहुत अच्छा मतलब क्वेश्चन आने के बहुत ज़्यादा चांसेस होते हैं, इसीलिए हमको वहाँ पे रेडी रखना है अपने आंसर्स। ये 10 मार्क का है हमारे पास, 150 वर्ड्स में हमको आंसर देना है। ओके, सो LK मतलब लक्ष्मी नारायण, और लक्ष्मी नारायण पूरम कृष्णा अनंतनाथ अय्यर, और LK लिख देते हैं, LK अनंत कृष्णा अय्यर was an anthropologist of British India, and he did his BA from University of Madras and obtained his doctorate from University of Breslau in Germany. He did his BA from the University of Madras and obtained his doctorate from University of Breslau, that is Germany. Okay, and he was the superintendent of ethnography and deputy inspector of school, कोचीन स्टेट, and he was head of the department of anthropology। कब से कब तक थे, 1921 से 1933 तक ये हेड ऑफ द डिपार्टमेंट ऑफ एंथ्रोपोलॉजी यूनिवर्सिटी ऑफ कलकत्ता के थे। He was superintendent of ethnography in 1902 and head department of anthropology, University of कलकत्ता 1921 से 33 तक। एंड अगर हम इनके एकेडमिक एंड रिसर्च अचीवमेंट्स की बात करें, एकेडमिक एंड रिसर्च अचीवमेंट्स की बात करें तो अय्यर वर्कड इन साउथ इंडिया इन जनरल एंड केरला इन पर्टिकुलर।
Ayer worked in South India in general and Kerala in particular, and he described in detail the traditional origin, ceremonial rites, religious belief, occupation and so forth of tribe commencing with kadars to फिशिंग ट्राइब्स, है ना, कादर्स के बारे में बताया, है ना। इन्होंने कामालन्स के बारे में बताया। ही डिस्क्राइब्ड इन डिटेल द ट्रेडिशनल origin, ceremonial rites, religious beliefs, occupations and so forth of tribes commencing with kadars. बोला पापा दे दे वो। kadars to fishing tribes is Zuvans and Kamalans, and he also studied higher caste like Tamil and Nambudri Brahmin, है ना। He also studied higher caste like Tamil and Nambudri Brahmins, and he made anthropological studies on Syrian Christian of Malabars, Cochin and Travancore. He made anthropological studies on Syrian Christians of Malabar, Cochin and Travancore. Syrian Christian of Malabar, Cochin and Travancore. और क्या किया? He is best known for his book Caste and Tribe of Mysore and Caste and Tribe of Cochin. सबसे इम्पोर्टेंट जो इन्होंने जो ये फेमस हुए थे, जाने जाते हैं बिकॉज ऑफ हिज 2 बुक्स। दोनों बुक में हमारे पास कास्ट एंड ट्राइब की स्टडी थी भाई, एक जगह मैसूर की स्टडी, एक जगह कोचिन की स्टडी। ही इज़ बेस्ट नोन फॉर हिज बुक caste and tribes of Mysore. Caste and Tribes of Mysore एक किताब ये है, दूसरा है Caste and Tribes of Cochin। इनके लिए बहुत ज़्यादा ये जाने जाते हैं। तो ये हमने मेन बात की अबाउट हिज एकेडमिक एंड रिसर्च अचीवमेंट्स। उसके बाद हम इनके और भी अगर कंट्रीब्यूशंस की बात करें, सो ही वॉज ऑल्सो द मेंबर ऑफ द स्कॉटिश एंथ्रोपोलॉजिकल सोसाइटी। ओके, Ayer was honorary member of Scottish Anthropological
सोसाइटी। एंड इनके अवार्ड्स एंड ऑनर्स की बात करें, and also he was the corresponding member of Royal Anthropological Institute of Great Britain and Ireland. Corresponding member of Royal Anthropological Institute of Great Britain and Ireland. इसके बाद हम इनके अवार्ड्स एंड ऑनर्स की बात करें, so Iyer was the recipient of Rao Bahadur, that is Officer D, Academy of French Academics of Science. Iyer was recipient of Rao Bahadur in 1921, इनको मिला था ऑफिसर डी एकेडमी ऑफ फ्रेंच एकेडमी ऑफ साइंस इन 1935। और क्या क्या मिला था भाई, दवान बहादुर, and was the president of anthropology section of Indian Science Congress. And was the president of anthropology section of Indian Science Congress 1913, and also Oriental Conference on Anthropology, Oriental Conference on Anthropology. एंड ऑल्सो यहाँ पर हम इम्पॉर्टेंट बात करें तो ही वॉज अ फाउंडेशन फेलो ऑफ इंडियन एकेडमी ऑफ साइंस, दैट इज़ बेंगलुरु, एंड ऑल्सो ऑनरी फेलो ऑफ एंथ्रोपोलॉजिकल सोसाइटी ऑफ फ्लोरेंस, वियना एंड कोलंगी। तो ये सब चीज़ें हैं जो हम यहाँ पे लिख सकते हैं। तो ये हमारे पास एक आंसर रहेगा, तो ये लिखना ठीक है। 150 वर्ड ये रहेगा, कट फुट करके इसको हम ला सकते हैं अंदर में। तो 10 मार्क का ये क्वेश्चन है। आगे बढ़ते हैं भाई, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास 5C, डिस्कस द significance of village studies in India। 10 मार्क्स का है, 150 वर्ड्स लिखने हैं। ओके, सो हम लिखें कि जो विलेज स्टडीज़ है हैव इट्स ओन इम्पोर्टेंस बिकॉज विलेज हैव इट्स ओन importance because these studies or these have enriched the knowledge of Indian society in general and rural India in particular. This have enriched the
knowledge of the Indian society in general, rural India in particular. After independence, planners in India realized that unless Indian villages were properly studied, no real progress could be made. After independence, planner in India realized that unless villages village were properly studied, no real progress could be made. और हम बात करें कि विलेज स्टडीज़ ने कैसे हेल्प किया इन दी प्लानिंग रूरल रिकंस्ट्रक्शन. विलेज help in planning rural reconstruction. According to M.N. Srinivas, in this studies, either the holistic nature of the village communities is discussed, or certain specific aspect of rural life are focused. For अगर हम बात करें एग्जाम्पल के तौर पे, सो कुछ एस्पेक्ट्स यहाँ पे देखे जाते हैं, जैसे कि द एक्सटेंट ऑफ सब डिविजन एंड फ्रेगमेंटेशन ऑफ लैंड होल्डिंग. द एक्सटेंट ऑफ सब डिविजन एंड fragmentation of land holdings. और क्या देखा जाता है, एग्रीगेरियन रिलेशन, फैमिली एंड किनशिप. एग्रीगेरियन रिलेशंस, फैमिली एंड किनशिप. और क्या क्या विलेज स्टडीज़ हमको हेल्प करता है. द नेचर ऑफ रूरल क्रेडिट हमको पता लगा सकते हैं, वेरियस एस्पेक्ट हम इसमें स्टडी कर सकते हैं, जैसे कि नेचर ऑफ रूरल क्रेडिट, कंडीशन ऑफ लैंडलेस लेबरर, द नेचर ऑफ रूरल क्रेडिट, conditions of landless laborers, and also intercaste relation, condition of lower caste and untouchable.
intercaste relations, condition of lower caste and untouchables, etc. Village studies also provide useful knowledge about Indian social reality, बिकॉज ये विलेज स्टडीज़ हमारे पास बहुत अच्छे सोर्स हैं फॉर अंडरस्टैंडिंग द यूनिक फीचर्स ऑफ इंडियन सोसाइटी लाइक द डोमिनेंट कास्ट, सेंस्क्रिटाइजेशन, यूनिवर्सलाइजेशन, पैरोकिलाइजेशन, ट्राइब कास्ट कंटिन्यूम, जजमेंटी सिस्टम, ये सब स्टडी करने में हमको हेल्प करता है. विलेज स्टडीज provide useful knowledge about Indian social reality. Okay. The village, because urban areas are more subjected to globalization and therefore do not retain the unique feature of Indian society. जो villages हैं जो कि फीचर को अभी भी यहाँ पे ये रिटेन करके रखे हैं, इसीलिए village studies are good source of understanding the urban areas are more subjected to globalization and therefore do not retain the unique features of Indian society. Thus, villages are the good source of understanding the unique features of Indian society like dominant caste, Sanskritization, universalization, parochialization, tribe caste continuum, judgment system, etc. Tribe caste continuum, judgment system, etc. It helped in achieving decentralization in governance through पंचायती राज इंस्टीट्यूशन. विलेजेस की स्टडी हमको बताएगी कि कैसे हम डिसेंट्रलाइजेशन अचीव कर सकते हैं थ्रू पंचायती राज इंस्टीट्यूशन. अचीविंग डिसेंट्रलाइजेशन इन governance through panchayati raj institutions, and it helped in designing developmental policies and studying their implementation. Helps in designing the
developmental policies and studying their implementation. The data collected by anthropologists are more accurate, reliable, and unbiased. Hence, they are highly useful for other social scientists. The data collected by anthropologists are more accurate, reliable, and unbiased. Hence, these are highly useful for other social scientists. लास्ट में कंक्लूड करेंगे by mentioning that village studies help in planning rural development and reconstruction. Village studies help in planning rural development and reconstruction, as nearly 70% of Indian population lives in rural areas. Rural development is very important for India. Rural development is very important for इंडिया। कि ये क्वेश्चन हो गया भाई, बड़ा लिखा है, कट किया जा सकता है। डिस्कस द सिग्निफिकेंस ऑफ विलेज स्टडीज इन इंडिया। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो है 5D। 5D का क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन है किस पे ऊपर? एंडेंजर्ड लैंग्वेजेस के ऊपर। हम बात करेंगे अबाउट द एंडेंजर्ड लैंग्वेजेस। ये 10 मार्क का क्वेश्चन है। 150 वर्ड्स लिखना है। तो हम बात करेंगे अबाउट द एंडेंजर्ड लैंग्वेज अकॉर्डिंग टू यूनेस्को। अकॉर्डिंग टू यूनेस्को, any language that is, according to UNESCO, any language that is, हम डेफिनेशन लेंगे एंडेंजर्ड स्पीसीज के। यहाँ पे हम डेफिनेशन लिख रहे हैं। सो अकॉर्डिंग टू यूनेस्को, एनी लैंग्वेज दैट इज स्पोकन by less than 10,000 people is potentially endangered। अगर हम बात करें as per survey, there are close to 780 languages in India, 780 languages in India, out of which about 600 are potentially endangered। ओके, एग्जाम्पल्स की बात करें, सो एग्जाम्पल्स ऑफ सच लैंग्वेजेस आर वादरी, कोल, हती, गोला, गिसरी,
in Maharashtra, Karnataka and Telangana. Vadri, Kolhati, Gola, Gisri. ओके एंड ये सब कहाँ पे हैं? वलहती इन महाराष्ट्र, कर्नाटका एंड तेलंगाना। उसके बाद हमारे पास हैं असम के अंदर भी कुछ एंडेंजर्ड लैंग्वेजेस हैं, जैसे कि देयर इज मोरन, तंगसा, एटन, and there seems to be about 250 languages that disappeared in the last 60 years. There seems to be about 250 languages that disappeared in the last 60 years. There used to be language called Adhuni, Dichi, Galu, Helgo, Katagi. The Bo language in Andaman disappeared 2010, and the Maiji language Sikkim disappeared in 2015. ओके लास्ट में हम लास्ट पैराग्राफ लिखेंगे। अ रिनाउंड लिटरेरी क्रिटिक एंड एक्टिविस्ट गणेश नारायण देव नोट्स। इनका एक राइटिंग है भाई, इम्पोर्टेंट लिटरेरी वर्क है। अ रिनाउंड लिटरेरी critic and activist Ganesh Narayan Devi notes when a language disappears, a unique way of looking at the world disappears. Okay, when a language disappears, a unique way of looking at the world disappears. Hence it is important to protect language. Hence it is important to protect languages. लास्ट क्वेश्चन लिखते हैं। क्वेश्चन नंबर 19 है, जो कि है 5E। हमको लिखना है ट्राइब एज अ colonial construct in India। ट्राइब एज अ colonial construct in India, ये 10 मार्क्स में लिखने हैं। 10 मार्क का क्वेश्चन है ये। 150 वर्ड्स में हमको आंसर देना है। ट्राइब एज अ colonial construct। सो हम आंसर लिखेंगे। सो हम बात करेंगे अबाउट
क्योंकि some anthropologist opines that the nomenclature tribe is a colonial construct, and there are various views that the character of this group was consolidated by the British through the process of classification and enumeration. It is not that the group corresponding to what we today called as tribe did not exist in the pre-colonial period, but the British replaced this group under the category of tribe. है ना, जो ब्रिटिश colonial administrators थे और ethnograpers थे, India were pioneers who surveyed and carried out expedition on tribe, but often their method were doubtful. हम यहाँ से लिखेंगे भाई, हम बात करेंगे अब जो टर्म है ट्राइब, ठीक है, उसके बारे में हम लिखेंगे। इसको ऐसे लिखते हैं भाई, ऐसे लिखते हैं, द ब्रिटिश colonial एडमिनिस्ट्रेटर, जो कि एथनोग्राफर थे, एथनोग्राफर मतलब जो कि कल्चर की स्टडी करता है, इन इंडिया वेयर पाइनियर, इन इंडिया वेयर pioneers who surveyed and carried out expeditions on tribes, but often their methods were doubtful. Their writings in many ways ended up contorting tribes as being synonymous with being backward, uncivilized, and barbarous. इसके बाद हम लिखेंगे जो ट्राइब का जो टर्म है, द टर्म ट्राइब evolved to designate a set of negative traits shaped under colonialism. Response to escalating tribal resistance to their rule. जो एक्सपर्ट इंग्लिश डिक्शनरी है, उसका जो कॉम्पैक्ट एडिशन है, एक्सप्लेन द ओरिजिनल मीनिंग ऑफ ट्राइब एज अ ग्रुप ऑफ पर्सन फॉर्मिंग अ कम्युनिटी और क्लेमिंग डिसेंट फ्रॉम अ कॉमन एंसेस्टर. The Oxford English Dictionary Compact Edition जो 1971 में आया था, explains the original meaning of tribe as a group
of persons forming a community and claiming descent from a common ancestor. And the change of tribe from being kinship based and a simple community into a primitive and barbarous condition marks distinct derogation of the term. जो ये बोल रहे हैं ना, ये प्रिमिटिव एंड बारबरस है, वो एक तरह से इनको अलग तरीके से दिखाने की कोशिश की जा रही है. द चेंज ऑफ ट्राइब फ्रॉम बीइंग kinship based simple community to a group in primitive and barbarous condition marks distinct derogation of the term. इसके मेरिट्स क्या हैं भाई? ट्राइब एज अ कॉलोनियल कंस्ट्रक्ट के डिमेरिट्स की बात करेंगे एंड मेरिट्स की बात करेंगे. पहले डिमेरिट्स की बात करते हैं. डिमेरिट्स में क्या है? द British government became instrumental in strengthening the exploitative attitude toward them and considered them as a burden to the so-called advanced and cultured civilized society in India. Okay. बर्डन बनाया गया जो सो कॉल्ड हमारे देश में जो एडवांस कल्चर या फिर सिविलाइज सोसाइटी है उसके ऊपर. ओके. एंड हेट्रेड एंड बिटरनेस हैव क्रिएटेड अ वाइड सोशियो कल्चरल गैप. ओके. इन इंडिया. ओके. हेट्रेड एंड बिटरनेस हैव क्रिएटेड अ वाइड सोशियो कल्चरल गैप. HATERD. हेट्रेड एंड bitterness have created a wide socio-cultural gap between so-called tribals and नॉन ट्राइबल्स. ओके. एक सोशियो कल्चरल गैप बन गया भाई ये हेट्रेड की वजह से बिटवीन द ट्राइबल्स एंड नॉन ट्राइबल्स. एंड द व्यू ऑफ ट्राइबल्स एज अ लोअर इवोल्यूशनरी फॉर्म ऑफ सिविलाइजेशन कंटिन्यूज इवन टिल डेट इन नेशनलिस्ट इंडिया. द व्यू ऑफ ट्राइबल्स एज अ लोअर इवोल्यूशनरी form of civilization continues even till date in nationalist India.
ओके। अभी भी इनको लोअर इवोल्यूशनरी फॉर्म माना जाता है। तो ये डिमेरिट्स हो गया ट्राइब एज अ कॉलोनियल कंस्ट्रक्ट के। इसके कुछ मेरिट्स भी हैं भाई। मेरिट्स क्या क्या हैं? मेरिट्स भी होते हैं, हर चीज़ के कोई नुकसान नहीं होता, हर चीज़ का नुकसान और फ़ायदा दोनों होता है। ऐसा कोई दुनिया में ऐसा कोई चीज़ नहीं जिसका सिर्फ फ़ायदा हो, या फिर दुनिया में ऐसा कोई चीज़ नहीं जिसका सिर्फ नुकसान हो। सो मेरिट ऑफ कंस्ट्रक्शन दी टर्म ट्राइब, जो इन्होंने ट्राइब बनाया था, ट्राइब एज अ कॉलोनियल कंस्ट्रक्ट, इसका क्या क्या मेरिट है उसके बारे में भी हम बात करते हैं। So before the advent of British rule, before the advent of British rule, the so-called tribals were neglected and OPPRESSED oppressed to the worst. Okay. Before the advent of British rule, the so-called tribals were neglected and oppressed to the worst possible ways and degrees by their neighbors. There was never made an attempt to improve the educational, medical and economic conditions of the aboriginals by the caste ridden Hindu society, but the general trend of modernization they promoted led to such development. जो ब्रिटिश थे वो मॉडर्नाइजेशन की तरफ फोकस कर रहे थे। सो जो जनरल ट्रेंड ऑल्सो है ना, जो जनरल ट्रेंड था, ट्रेंड ऑफ मॉडर्नाइजेशन they promoted led to such developments. ओके। सो ये हो गया हमारे पास पूरा का पूरा जो क्वेश्चन था वो हमारे पास आज ख़त्म होता है भाई। एंथ्रोपोलॉजी ऑप्शनल का टेस्ट सीरीज़, ये अनअकैडमी का टेस्ट सीरीज़ था, है ना। ओके, ये अनअकैडमी का टेस्ट सीरीज़ था यहाँ पे, और यहाँ पे ये ख़त्म होता है। ठीक है, इसके बाद हम देखेंगे अबाउट बायजूस के टेस्ट सीरीज़ की, उसके बाद हम PW के एंथ्रोपोलॉजी ऑप्शनल के टेस्ट सीरीज़ की बात करेंगे।